Hello everyone, hope you are doing well. I'm going to explain this question in this video. The question says, state the law of conservation of momentum and give its one practical daily life application. हमें डिफाइन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है और एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल भी देना है. Second question, an object of mass 50 kg is accelerated uniformly from a velocity of 4 meter per second to 8 meter per second in 8 seconds. एक बॉडी जिसका मास 50 किलोग्राम है उसे एक्सेलरेट किया गया है यूनिफॉर्मली, जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड 8 सेकंड्स में चेंज हुई है. कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी फाइंड आउट करना है. लेट अस सी आंसर फॉर दिस question. Let us start with first one. Let us define what is law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. It states that for two or more bodies in an isolated system acting upon each other, their total momentum remains constant unless an external force is applied. उसका टोटल मोमेंटम कभी भी कांस्टेंट रहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ना गया. लेट अस टेक ए प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस. A system of gun and a bullet before firing the gun both the gun and the bullet are at rest. वो रेस्ट में होती हैं. at rest. When bullet is fired, then the total momentum becomes zero again. Let us take second question in this. यहाँ पे क्या कहा गया है. मास क्या दिया गया है 50 किलोग्राम्स मास है. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड है. फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड है. टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड्स. ये गिवन डेटा है क्वेश्चन का. हमें इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. मास कितना है 50 किलोग्राम से. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है. ये क्या होगा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये क्या होगा इनिशियल मोमेंटम है. अब हम फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं. फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू v. मास कितना है यही 50 किलोग्राम्स. वेलोसिटी कितनी है वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है. सो ये क्या होगा 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा. ये क्या है फाइनल मोमेंटम.
अब हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्सर्टेड फाइंड आउट करते हैं. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू v माइनस u अपॉन t. अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास कितना है 50 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4, टाइम कितना है 8. ओके, सो इससे हम लिख सकते हैं 50 इंटू 4/8, 4 1 जा 4 2 जा 1/2 इंटू 50 कितना हो गया 25 न्यूटन्स. सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, therefore the magnitude of force exerted is 25 newtons. I hope you have understood the explanation. Thank you.